बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों, आपको समीना खान का सलाम पहुँचे। दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं पर भी हों, साथ खैरियत के हों, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखें। ये देखें, ये मैं बेटी के घर आई हूँ और ये ऑस्ट्रेलियन तोते जो हैं वो पाले हुए हैं और ये बहुत सारे पेयर्स थे, लेकिन वो छोटी बच्ची जो है वो छेड़ती है इसको और तंग करती हैं, तो वो एक आध मर भी गए। उसकी टेल खींच लेती है पीछे से या हाथ मार देती है जब ये इस अपने केज में चिपटते हैं ना, तो वो फिर हाथ मार देती हैं। तो काफ़ी मर गए हैं, लेकिन अभी भी माशाल्लाह से प्यारे लगते हैं परिंदे। मैं दिखाऊंगी आपको अपने मेरे बेटे का जो है वो स्टार्ट ले रहा है फार्म हाउस का, और उसके साथ ही उसने जो है वो कुछ मुर्गियाँ जो हैं वो पाली हुई हैं। उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, तो काफ़ी स्टाइलिश ही हैं, आम मुर्गियाँ नहीं हैं वो। और उनकी जो है वो ब्रीड भी करवा रहे हैं, तो वो बॉक्सेस भी हैं जिसमें से बच्चे निकल रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो अच्छा लगेगा। फार्म हाउस जो है वो उनका अभी तक अनकम्प्लीट है, लेकिन कुछ उसमें मुर्गियाँ वगैरह ला के रखी हैं। कुछ सिक्योरिटी का मसला है, तो और जानवर ला रहे हैं। उनको हमेशा से हर परिंदे, हर जानवर से उनसियत रही है, ख़ास तौर पे कुत्ते से और घोड़ा वगैरह जो है, ये चीज़ें, यहाँ तक कि शेर से भी उनको बहुत उनसियत है। तो मैं आपको वीडियो उनकी दिखाती हूँ, आप देखिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा।
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे बेटे के ये फार्म हाउस और जो कि अभी स्टार्ट ले रहा है और पोल्ट्री फार्म उन्होंने घर की छत पे अपने बनाया हुआ है, उसमें जो मुर्गे हैं वो आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे को इस काविश में जो है वो कामयाब करे, उसके इस काम में उसकी बेगम और बच्चा जो है वो भी हेल्प करते हैं। जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ये मेरा पोता है शायान ख़ान, जो अपने वालिद के साथ जो है उनके कामों में हेल्प करते हैं, और इसी तरह से कि वाइफ जो है वो भी इनका साथ देती हैं। तो दोनों इसी इस पे चल रहे हैं कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आएगी। जैसे जैसे फार्म हाउस में नए परिंदे और जानवर आए तो उसको भी जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी, ख़ुद भी देखूँगी, क्योंकि मैं ख़ुद कराची में हूँ और वो कोयटा में हैं। तो गाहे बगाहे वो ये चीज़ें मुझे भेजते हैं, तो वीडियोज़ वगैरह बना के भेजते, तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, थम्स अप करेंगे, बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे। और अब दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।